Dear students, welcome to RPEducator official YouTube channel. This is third lecture of electrical measurements and instrumentation subject, and in this lecture we will study about methods of measurement, which is the topic of unit first. Okay, so let's start. Methods of measurement. The methods of measurement may be broadly classified into two categories. First is direct measurement and second is indirect measurement. Now first is direct measurement. First point is, in this method, the measured or the unknown quantity is directly compared against a standard. Means in the direct measurement, we will compare the value of measured or the unknown quantity with the standard value. Now next point is, this method of measurement sometimes produces human error and hence gives inaccurate result. Means in this measurement, human error occurs and due to which we will get inaccurate results. Now second is indirect measurement. Now what is indirect measurement? In the indirect measurement, the comparison is done with a standard through the use of a calibrated system. Means in this indirect measurement, calibrated system's value is compared with the standard value. Now second point, this method of measurement is more accurate and more sensitive than direct measurement. So these are more preferred over direct measurement. Indirect measurement is better than direct measurement because in this method the measurement is more accurate and more sensitive. Now I am showing here example of direct measurement and indirect measurement. This is the example of direct measurement. In the direct measurement, this object is directly compared with the measuring instrument. तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को स्केल के सामने रख के हम कंपेयर कर रहे हैं और वैल्यू नोट कर रहे हैं. तो ये हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का स्केल के थ्रू मेजरमेंट कर ले रहे हैं. ओके, नाउ दिस इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट. अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मेजरमेंट में ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट से कंपेरिजन नहीं हो रहा है. यहाँ पे एक गेज रखा हुआ है, जो कि हम ये गेज पहले से हमको पता है कितना इसका लेंथ है और इसके सामने हम इस ऑब्जेक्ट को रख के कंपेरिजन कर रहे हैं. तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेजरमेंट. ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का स्केल के थ्रू डायरेक्टली मेजरमेंट कर रहे हैं. एंड नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का किसी गेज को सामने रख के हम कंपैरिजन कर रहे हैं. Dear students, if you have any question or any doubt, you can ask your question or doubts by commenting on this video. Thank you.